जय जगन्नाथ। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर क्वेश्चन आंसर सेशन। A client with Parkinson's disease is experiencing anorexia and vomiting since beginning of treatment with levodopa. गोटे पेशेंट आम पाखु आसी पेशेंट रो कोन अछि पार्किंसंस डिजीज। जेतेबेले आमे पेशेंट रो लेवोडोपा स्टार्ट करूचे पेशेंट रो कोन होची ना एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग। व्हाट शुड बी इनिशियल एक्शन? हमरो इनिशियल एक्शन कोन रहिबो? Assess his food preference, monitor blood pressure, hold medication, administer medication with food. आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी एडमिनिस्टर मेडिकेशन विथ फूड। हमर लिवोडोपा रो तार प्राइमरी साइड इफेक्ट कोन रहउची ना पेशेंट को नोजिया हबो, वोमिटिंग हबो, एनोरेक्सिया हबो। एटा काहे कि हबो पेशेंट को ना ड्यू टू पेरिफेरल डोपामाइन कन्वर्सन। एटा हले हमर कोन हबो ना ट्रिगर करिवो हमर ट्रिगर केमो रिसेप्टर जोन जोटे कि हमको पेशेंट रो नोजिया वोमिटिंग होबो। तो सेति पे हमें पेशेंट को लेवोडोपा विथ फूड ताको एडमिनिस्टर करिवा। एसएस फूड प्रेफरेंस हमरो कोन रहइबो एटा हमरो एटा नॉट रिजल्व नोजिया एंड वोमिटिंग। मॉनिटर ब्लड प्रेशर कोन रहइबो हमरो एटा हमरो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट काहे कि ना हमरो एटा कोन करे ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन किंतु एटा हमरो जेहेतु पेशेंट नोजिया वोमिटिंग देची एटा हमरो जीआई डिस्टर्बेंस पाई नुह। नॉट प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर जीआई अपसेट। ऑप्शन सी रे कोन देची होल्ड मेडिकेशन। आमे लिवोडोपा डायरेक्ट होल्ड करिबार नाही पेशेंट रो काहे कि ना rapidly return of severe Parkinson symptoms। ते हमर करेक्ट आंसर कोन आसीबो ऑप्शन डी एडमिनिस्टर मेडिकेशन विथ फूड। कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन द कोर बॉडी टेम्परेचर हमरो हाईएस्ट केते बेले रहउची? अर्ली मॉर्निंग, नून, लेट आफ्टरनून, नाइट। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी लेट आफ्टरनून। कोर बॉडी टेम्परेचर हमरो हाईएस्ट केते बेले रहउची ना लेट आफ्टरनून रे जोटा कि बिटवीन 4 to 6 pm। Which one of these is not a cardiac biomarker? कोउटा हमरो कार्डियक बायोमार्कर नुह। अल्कालाइन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबा हमरो ऑप्शन ए अल्कालाइन फॉस्फेट। एटी हमरो नोट पचारिची कोउटा हमरो कार्डियक बायोमार्कर नुह। अल्कालाइन फॉस्फेट हमरो लिवर रो बायोमार्कर। आ बाकी तीनटा हमरो रहउची ए तीनटा हला हमरो cardiac biomarker। A patient presents to the emergency department with blood pressure 180 by 130 mmHg। ते पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आसी तारो ब्लड प्रेशर केते अछि ना 180 by 130 mmHg। हेडेक एंड कंफ्यूजन तारो हेडेक भी होची एंड पेशेंट हमरो कंफ्यूजन भी अछि। Which additional finding is consistent with diagnosis of hypertensive emergency? को additional finding हमरो diagnosis करिवो hypertensive emergency को?
रेटाइनोपैथी, ब्राडिकार्डिया, जॉन्डिस, यूरिनरी रिटेंशन। आंसर करते समस्ते। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आम क्या कहे जिते आमर ब्लड प्रेशर मोर देन 180/120 mm of Hg होची। आमर बीपी जिते मोर देन 120/180 होची सेतेबेले कौन होची आमर ना सीवियर organ डैमेज होची। एंड हेडेक एंड कन्फ्यूजन आमर कौन रोची ना हाइपोटेंसिव हेडेक एंड कन्फ्यूजन आमर कौन रोची ना हाइपरटेंसिव एनकेफालोपैथी। यार करेक्ट आंसर आसीबा हमर ऑप्शन ए रेटाइनोपैथी। एटा हमर कोन ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन of eye damage. The nurse understands that providing a complete bed bath may have which one of the following cardiovascular effects. She therefore plans for rest period during the bath. Increase oxygen consumption, decrease in blood supply to the skin, decrease preload, increase afterload. आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। हमर बेड बाथ देले कोन होबो ना आमे तेले बेड बाथ दोचु पेशेंट को सेते बेले भेजो डायलेशन होबो जोटा कि कैन कोज इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड एठी कोन होबो हमर ना इंक्रीज प्रीलोड होबो एंड decreased afterload होबो। Cushing's triad refers to a set of signs that are indicative of Cushing triad हमरो को डिजीज रो साइन increase intra-abdominal pressure, increase intrathoracic pressure, increased intraocular pressure, increased intracranial pressure। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी इंक्रीज इंट्राक्रानियल प्रेशर। कुशिंग ट्रायड हमरो कुशिंग ट्रायड हमरो इंक्रीज आईसीपी रे देखा जाउची। नॉर्मल आईसीपी हमरो केते ना 5 to 15 mmHg। कुशिंग ट्रायड रे हमरो कोन कोन देखा जाय ना इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकेंड है हमरो ब्राडिकार्डिया एंड थर्ड रे आसला हमरो इरेगुलर रेस्पिरेशन। इटा को हमरो शॉर्ट ट्रिक रे मन रखिबे एसबीआई। एस रे हमरो इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बी रे हमरो आसीबा ब्राडिकार्डिया, आई रे आसीबो इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी इंक्रीज इंट्राक्रानियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर हमरो को क्षेत्र रे देखा जाय ना ग्लूकोमा केस रे। हमरो नॉर्मल आईओपी केते ना 10 to 21 mmHg। Which one of the following is a type of generalized seizure? कोटा हमरो generalized seizure type absent seizure, pseudo seizure, partial seizure, complex partial। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए एब्सेंस सीजर। हमरो जनरलाइज्ड सीजर रो टाइप कोन एब्सेंस सीजर को हमें पेटिटमाल सीजर भी कहूचु पेटिटमाल सीजर। एंड कोन कोन आसीबो जनरलाइज सीजर रे टॉनिक क्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर।
स्यूडो सीजर आमर कोटा भी मेडिकल टर्म नुह पार्शियल सीजर रे आमर कोन आछि पार्शियल को हमें फोकल सीजर भी कहउछु फोकल सीजर तारो दुईटा टाइप आछि गोटे हला सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल कॉम्प्लेक्स पार्शियल आमर आछि जोटा कि पार्शियल सीजर रो टाइप रहउची त्यार ऑप्शन आसीबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एब्सेंट सीजर Which of the following is a non-drug therapy for children with epileptic seizure? कोउटा हमरो नॉन ड्रग थेरापी जोटा कि चाइल्ड हमरो एपिलेप्टिक सीजर अछि कीटोजेनिक डाइट हाई प्रोटीन डाइट लो फैट डाइट हाई फाइबर डाइट आंसर करंतु समस्ते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए कीटोजेनिक डाइट कीटोजेनिक डाइट रे हमरो कोन रहउची ना हाई फैट रहउची एडिक्वेट प्रोटीन रहउची एडिक्वेट प्रोटीन रहउची एंड लो कार्बोहाइड्रेट रहउची कार्बोहाइड्रेट कीटोजेनिक डाइट हमरो कोन रहउची ना नॉन ड्रग थेरापी रहउची नॉन ड्रग थेरापी जोटा कि हमरो स्पेशली used to manage drug resistant एंड कीटोजेनिक डाइट देले हमर कोन होची ना कीटोन प्रोड्यूस होची बॉडी रे कीटोन प्रोड्यूस होची जोटा कि हमर कोन करिवो ना क्रॉस इनटू ब्रेन एंड हेल्प अल्टर मेटाबॉलिज्म जोटा कि हमर कोन होबो ना रिड्यूस एंड प्रिवेंट सीजर एक्टिविटी sound created by turbulent abnormal blood flow of heart heard during auscultation ए क्वेश्चन हमरो टिके टाइपिंग मिस्टेक हेची ते क्वेश्चन टा रहइबो हमरो साउंड क्रिएटेड बाय turbulent abnormal blood flow of heart here during auscultation during auscultation time रे हमरो जतेले turbulent abnormal blood flow को केस रे देखा जाउची गैलप फ्रिक्शन रॉप मर्मर्स एंड रेस्पिंग आंसर करंतु समस्ते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी मर्मर्स हमरो जतेले टर्बुलेंट एब्नॉर्मल फ्लो रे को साउंड सुना जीवो ना मर्मर साउंड गैलप हमरो कोन रहउची ना लो पिच्ड साउंड रहउची फ्रिक्शन रॉप हमरो कोन ना स्क्विंग साउंड जोटा कि हमरो को केस रे सुना जाउची ना पेरिकार्डाइटिस एंड रेस्पिंग हमरो रहइबो एओटिक स्टेनोसिस रे सुना जाउची एओटिक स्टेनोसिस रे यार करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन सी Which one of the following is the sound that provide the systolic pressure reading and is the first correct cough sound phase 1 heard as the pressure in the blood pressure cuff is released जेतेबेले पेशेंट रो में ब्लड प्रेशर मेजर करूचु सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जेतेबेले नउचु जेतेबेले फास्ट करेक्ट कफ साउंड ता सुना जाउची सेही साउंड ता को कोन कुआ जाउची ए शार्प टैपिंग साउंड ए स्विशिंग और हुशिंग साउंड ए थंब ए सॉफ्ट ब्लोइंग मफल्ड साउंड आंसर करंतु समझते
यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए शार्प टेपिंग साउंड। आमर फास्ट फेज पचारिछि फास्ट फेज रे सुना जाउछि आमर शार्प टेपिंग साउंड। ए स्विशिंग और हुशिंग साउंड सुना जाउछि आमर फेज सेकेंड रे। थंब साउंड सुना जाउछि आमर फेज थर्ड रे। एंड सॉफ्ट ब्लोइंग मफल साउंड सुना जाउछि आमर फेज फोर्थ रे। एंड फेज फिफ्थ आमर रोची जोटा कि डायस्टोलिक प्रेशर। Which of the following treatment strategy have been shown to improve the outcome in patients diagnosed to have Guillain-Barre syndrome? गोटे पेशेंट आमर पेशेंट कौन अच्छी ना Guillain-Barre syndrome अच्छी को आउटकम हमको डायग्नोसिस करिवो पेशेंट रो Guillain-Barre syndrome? हीट थेरापी, इमोबिलाइजेशन, एंटीकोलिनेस्टेज, प्लाज्मा फेरेसिस। आंसर करंतु समस्ते। चलंतु कमेंट करंतु समस्ते Guillain-Barre syndrome कौन एंड Guillain-Barre syndrome रे हमरो एसेंडिंग वीकनेस देखा जाउची ना डिसेंडिंग वीकनेस देखा जाउची? यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस हमरो कोन थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। एंड यार सेकेंड ट्रीटमेंट कौन रहिबो ना आईवी थेरापी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी। एंटीकोलिनेस्टेज आमे को केस रे यूज करिबा ना मायस्थेनिया ग्राविस रे। इमोबिलाइजेशन हमरो कोन करिवो ना इमोबिलाइजेशन हेले रिस्क फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। Parkinson's disease include all these symptoms except। Parkinson disease रे सब symptoms देखा जाउची except को symptom नुहो bradykinesia and loss of postural reflexes, stiff limbs, thunderclap headache, tremors of hand, arm, leg, jaw and face। आंसर करंतु समस्ते। पार्किंसन डिजीज रे हमरो ब्राडिकाइनेसिया एंड लॉस ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस देखा जाए, स्टीप लिम्ब भी देखा जाए, ट्रिमर्स ऑफ हैंड आर्म्स लेग्स जॉ एंड फेस भी देखा जाए। कोटा हमरो सिम्पटम्स नुहो ना ऑप्शन सी थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक हमरो को केस रे देखा जाए ना सब अराक्नोइड हेमोरेज। Which term would the nurse use to document pain at one site that is perceived in another site? पेन जेतेबेले हमरो one site रू another site को perceive करूची ताकू कोन कुआ जाउची? रेफर्ड पेन, फैंटम पेन, इंट्रैक्टेबल पेन, आफ्टरमैथ पेन। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए रेफर्ड पेन। पेन जेतेबेले हमरो वन साइड रू एनदर साइड को परसीव करूची ताकू रेफर्ड पेन कुआ जाउची। फैंटम पेन कोन ना फैंटम पेन देखा जाए आफ्टर एम्पुटेशन। इंट्रैक्टेबल पेन कोन ना सीवियर एंड कांस्टेंट पेन। आफ्टरमैथ पेन हमरो एटा हमरो नॉट ए clinical term for pain type। The two main factors for determining blood pressure and peripheral resistance and which one of the following? कोउटा हमरो दीटा मेन फैक्टर जोटा कि ब्लड प्रेशर आर पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड which one of the following? Cardiac output, age, pulse pressure, pulse deficit। आंसर करंतु समस्ते।
यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट हमरो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस इनटू कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट हमरो कोन ना स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम हमरो केते 70 ml इनटू हार्ट रेट हमरो केते 72 नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5040 ml पल्स प्रेशर कोन ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स डेफिसिट कोन रहउची हमरो एपाइकल पल्स माइनस रेडियल pulse. Signs of increased intracranial pressure are increased ICP रो sign कौन weak rapid pulse normal blood pressure fever lethargy rapid weak pulse fall in blood pressure low temperature slow bounding pulse rising blood pressure high temperature slow bounding pulse fall in blood pressure low temperature आंसर करंतु समझते यार आंसर आसीबो ऑप्शन सी स्लो बाउंडिंग पल्स राइजिंग ब्लड प्रेशर हाई टेम्परेचर स्लो बाउंडिंग पल्स हमरो कोन ना एटा हला ब्राडिकार्डिया राइजिंग ब्लड प्रेशर हमरो रहला increase blood pressure and high temperature. The nurse is assessing a client with tentative diagnosis of brain tumor. ए नर्स गोटे पेशेंट को आसेस करुची पेशेंट टेंटेटिव डायग्नोसिस कोन ना तारो ब्रेन ट्यूमर अछि व्हाट वुड द नर्स एंटिसिपेट द क्लाइंट्स प्राइमरी कंप्लेंट टू बी पेशेंट रो प्राइमरी कंप्लेंट कोन रहइबो डिक्रीज्ड एपिटाइट फ्रीक्वेंट इंसोम्निया रिकरेंट हेडेक पेरिफेरल एडिमा आंसर करंतु समझते यार करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन सी ना रिकरेंट हेडेक जोटे कि हमरो हेडेक होची मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर approximately 50% और मोर पेशेंट रे देखा जाए फ्रीक्वेंट इंसोम्निया हमरो स्लीप डिजॉर्डर पेरिफेरल एडिमा हमरो होची किडनी डिजॉर्डर temporary paralysis of 7 cranial nerve that causes paralysis only the affected side of face occurs in 7th cranial nerve रे जते बळे paralysis होची हमरो affected side face रे जो affected side रहउची सेटा को केस रे बेल्स पाल्सी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया माइलाइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस आंसर करंतु समझते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए बेल्स पाल्सी 7th cranial nerve डैमेज हेले हमरो कोन हबो ना बेल्स पाल्सी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हमरो कोन ना 5th cranial nerve एफेक्ट हेले माइलाइटिस कोन ना इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस कोन रहउची ना ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम the correct angle for head of the bed elevation in ventilated patients to decrease respiratory compliance ventilated patient रो तारो head of the bed हमें केते elevate करिबा जोटा कि तारो decrease होबो respiratory compliance between 20 to 30 degree between 30 to 45 degree between 45 to 60 degree
90 डिग्री। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी बिटवीन 30 to 45 डिग्री। Which layer encloses the valves of the heart? Pericardium, myocardium, epicardium, endocardium. आंसर करंतु समस्ते। हार्ट रो को भाल्व हमरो क्लोज थाए हार्ट्स? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट रो क्लोज रे के थाए ना एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर। मायोकार्डियम हमरो रहउची मिडिल लेयर। तार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी एंडोकार्डियम। Which two valves of the heart open during ventricular contraction of the heart? During ventricular contraction time रे heart रो को दीटा valve हमरो open होची? Aortic and tricuspid valve, pulmonic and aortic valve, pulmonic and tricuspid valves, aortic and mitral valves. आंसर करंतु समस्ते। ventricular contraction time रे हमरो को दीटा valve open होची ना pulmonic and aortic valves. Correct answer option B. The amount of resistance to ejection of blood from ventricle is called preload, ejection fraction, afterload and diastolic pressure. आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी आफ्टरलोड। प्रीलोड हमरो कोन रहउची ना प्रीलोड रहउची ventricular filling at the end of diastole। इजेक्शन फ्रैक्शन कोन रहउची हमरो percentage of blood pumped out of filled ventricle with each heartbeat। एंड डायस्टोलिक प्रेशर हमरो कोन रहउची ना pressure in the ventricular or filling phase just before contraction। Which of the following blood vessels has two major branches, circumflex artery and anterior descending artery? Circumflex artery and anterior descending artery रहउची एटा हमरो को आर्टेरी रो ए दुटा ब्रांचेस रहउची? posterior interventricular artery, right pulmonary artery, right coronary artery, left coronary artery। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी लेफ्ट coronary artery। लेफ्ट coronary artery रे रहउची हमरो गुटेला लेफ्ट circumflex artery and anterior descending artery। anterior descending artery का को ब्लड सप्लाई करूची ना लेफ्ट डायगोनल आर्टेरी। लेफ्ट डायगोनल आर्टेरी हमरो कोन करूची ना anterior और septal part of heart को हमरो ब्लड सप्लाई होची। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का को ब्लड सप्लाई करूची ना लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी का को ना लेटरल और पोस्टेरियर पार्ट ऑफ हार्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी हमरो पोस्टेरियर पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ब्लड सप्लाई करूची। पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी का को ब्लड सप्लाई करूची ना राइट
मार्जिनल आर्टेरी को एंड राइट मार्जिनल आर्टेरी हमर कोन करछि ना राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एसए नोड एबी नोड एंड inferior part of the inferior part of heart को blood supply करूचे एंड राइट pulmonary हमर artery कहा को blood supply करूचे ना lungs को तो ए क्वेश्चन रे करेक्ट आंसर आसीबो हमरो ऑप्शन डी लेफ्ट coronary artery T wave in the ECG graph represents ECG graph pro T wave कहा को represent करूचे ventricular depolarization atrial depolarization ventricular repolarization atrial repolarization आंसर करंतु समस्ते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी ventricular repolarization ट्यूब हमर कोन होची ना ventricular repolarization ventricular depolarization कोन ना QRS कॉम्प्लेक्स रे देखा जाए atrial depolarization हमरो P wave रे which diagnostic test can measure the size and ejection fraction of heart रो size and ejection fraction measure करिया पई को diagnostic test करा जाउची इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इकोकार्डियोग्राफी ट्रेडमिल टेस्ट बेरियम स्वालो आंसर करंतु समस्ते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी इकोकार्डियोग्राफी हार्ट रो साइज एंड इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर करिया पय हमरो कोन इकोकार्डियोग्राफी करा होची इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कोन हमरो ना ईसीजी जोटा कि हमरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करिया पय हमरो ईसीजी करा जाउची ट्रेडमिल टेस्ट कोन ना याको हमें स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाउची एटा कोन होची ना मॉनिटर हार्ट rhythm and blood pressure during exercise बेरियम स्वालो को केस रे करा जाउची ना एक्स-रे इमेजिंग फॉर GI tract after cardiac catheterization immediate priority nursing intervention is cardiac catheterization परे हमरो immediate priority nursing intervention कोन रहिबो check pulse check for distal pulses and bleeding from site provide bed rest for 4 to 6 hours and move the extremities every hourly ensure patient safety by helping him get out of the bed instruct to drink adequate fluid to flush out the contrast agent if used आंसर करंतु समझते कार्डियक कैथेटराइजेशन परे हमरो इमीडिएट प्रायोरिटी इंटरवेंशन कोन रहइबो ना चेक फॉर डिस्टल पल्सेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम साइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन बी रे कोन देला प्रोवाइड बेड रेस्ट फॉर 4 to 6 hours and move the extremity every hourly ना move extremity every hourly हबनी ensure patient safety by helping him get out of bed immediately patient को out of bed करिबा नाही proper bed rest दरकार patient रो instruct to drink adequate fluid to flush out the contrast agent if used एटा भी हमरो important but not priority oslar nodes and genuelation are manifestation of oslar nodes and genuelation को केस रे देखा जाए मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस एओर्टिक रिगर्जिटेशन आंसर करंतु समझते ओस्लर नोड्स एंड जेनुएलेशन हमरो ना एंडोकार्डाइटिस रे देखा जाए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर with aging the blood pressure is often higher due to एज टाइम रे ब्लड प्रेशर हमरो काहे की अधिक थाए
loss of muscle mass, change in exercise and diet, decreased peripheral resistance, decreased elasticity in arterial walls. Answer କରନ୍ତୁ। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी, डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वाल्स। एज हेले हमर कोन हुए ना आर्टेरियल वाल रो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाए, जोथि पई कि हमर ब्लड प्रेशर हायर हुए। पीपल विथ मेकानिकल valves require to take these medication lifelong। पेशेंट रो मेकानिकल भाल्व रिपेयर होता है, लाइफ लॉन्ग ताको को मेडिकेशन दिया जिवो। एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीकोआगुलेंट्स, एंटीबायोटिक्स। मेकानिकल भाल्व केस रे हमरो पेशेंट को एंटीकोआगुलेंट दिया जिवो। आजिरो सेशन रे जहार भी किछि डाउट थिबो कमेंट रे पचारिबे। आजिरो सेशन आपण मान को केमति लागिला कमेंट करिवे। थैंक यू।